से चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। नंबर 4 लॉ मिनिस्टर साहब टू मूव आइटम नंबर 4। भैया कर देना वा ठहर जा। आइटम नंबर 4। Sir, I, Minister for Law and Justice and Parliamentary Affairs, today before the National Assembly, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 stands laid. Item number 4A. Mr. Speaker, to move item number 4A. Sir, I beg to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Numbers of Judges Amendment Bill 2024 stands introduced. आजम नजीर तारा साहब टू मूव आइटम नंबर 4B. मैं जरा इस पे थोड़ा बयान कर दूं। आगे ये इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है, ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का, उससे भी निपटा जा सके। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सर आईनी बेंचेस के ये जब आएगा ना, उसके लिए भी सर हमें कुछ जजेस चाहिए थे। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी बार बॉडीज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वो बहुत देर से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर, सर वहाँ पे महीनों के हिसाब से सर पेंडेंसी रहती है और हज़ारों केस पेंडिंग है। हज़ारों केस पेंडिंग होने के बावजूद जजेस नहीं जाते। तो हमने सर ये इसलिए तादाद में 34 तक का इजाफा किया है, अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं। हो सकता है पहली फेज़ में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े, तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। वी हैव लेफ्ट इट ओपन फॉर द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये सर इसके बैकग्राउंड। गौर साहब जब बारी आई, गौर साहब आपको दो आइटम नंबर 4B मूव कीजिए आजम साहब। सर जी मैं दूंगा जब आता वक्त आएगा। I wish to introduce the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024. A bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024. 9 से 12 की हैं सीट्स, पेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। A bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010. Bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024. सर इसमें भी हमने 9 से 12 की हैं सीट्स, पेंडेंसी ज़्यादा है यहाँ पे। A bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 stands introduced. Item number 4E to 4J. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take considerations in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with in order to take consideration of bill item number 4D to 4J. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4E. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024, as introduced in National Assembly, be taken into consideration at once.
جی گوہر صاحب آپ بات کرنا چاہ رہے تھے اس پہ. سر اگر یہ ہمیں بھی سن لیتے یہ انفیئر ہے سر. تو یہ بات نہیں، کر لیں. پہلے میں بتاؤں تو صحیح، میں نہیں سننے دوں گا. نہ سر نہ یہ نہیں بولیں گے. تشریف رکھیں نہ سر پہلے بات تو سنیں. گوہر صاحب نہ انہوں نے ان کی بات سننے پہ میں آپ کو موقع دیتا بات سنی ہوں. ہے. آپ بات کیجیے. ان کے لیے قانون فرق ہے اور ہمارے لیے فرق ہوگا. بات کیجیے آپ. سر یہ سیریس افیئر ہے، یہ نہیں چلے گا. یہ کر لے پھر سر آپ میسج میں ڈالیں. یہ نہیں سنیں گے. نہیں سنیں گے. نہیں سنیں گے سر، میں کہہ رہا ہوں نہیں سنیں گے. آپ ممبر سے کہیں کہ سنیں ان کی بات تاکہ آپ کی بات بھی سنی جائے. ان کو ایک ہی سبق پڑھایا گیا ہے، ایک ہی سبق انہیں آتا ہے، دوسرا سبق پڑھا ہی نہیں ہے انہوں نے. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوہر صاحب بھی بات کریں تو کائنڈلی ٹیک یور سیٹ. چاہتے ہیں گوہر صاحب سنیں گے. آپ ان سے کہیں پہلے ان کی بات سن لیں تاکہ یہ آپ کی بات سن لیں. اگر آپ بات نہیں، میرا خیال ہے وہ سننا نہیں چاہتے تو پھر بھی گوہر صاحب کریں گے. گوہر صاحب یہ نہیں سنیں گے سر، یہ نہیں سنیں گے. آپ اگر ان کی بات آپ لوگ سن لیں گے تو آپ کی بات بھی یہ سننے دیں گے. تو آپ پلیز ممبران سے کہیں تشریف رکھیں، ان کی بات سنیں، پھر آپ کی باری آ جائے گی. جی آپ کی باری آ گئی نا جی، مگر ان کی بات سن لیں پہلے. جی میں جناب اسپیکر پہلے جیسے کہ یہ نہیں چلے گا سر. آپ ووٹ کریں، آپ سر ووٹ کروائیں. نہیں بات نہیں سر، میں نے بل انٹروڈیوس کر دیا ہے. یہ پاکستان کے ان کی بات سنی جائے گی، ان کی بات سنی جائے گی تو آپ کی بھی سنی جائے گی. ان سے کہیں تشریف رکھیں، اپنے ممبران سے کہیں تشریف رکھیں تاکہ ان کو بھی بولنے دیں. عامر ڈوگر صاحب. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اس وقت اجلاس جاری ہے، جہاں پر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل ایوان میں پیش کیا گیا ہے. وزیر قانون عاصم نصیر تارڑ کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ایوان میں پیش کیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی اس وقت ایوان میں ہی موجود ہے. اسپیکر سردار ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس اور اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی اور شور شرابہ کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر میں نے بل موو کر دیا ہے. میری آپ سے یہ استدعا ہوگی کہ سر اس پہ ووٹنگ کرائی جائے. جناب اسپیکر اس پہ ووٹنگ کرا لی جائے. ہاں کرے سر، نہیں سنیں گے. یہ میں نے جو بات کہہ رہی تھی کہہ دی ہے. ہاں وہ عامر صاحب گئے ہیں ان کو سمجھانے. آپ کی بات سنیں گے تو ان کی سنی جائے گی. سر یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا سر. آج یہ نہ سننا چاہتے ہیں نہ یہ سنیں گے. میں سر موو کرتا ہوں، آپ ایک پاس کرائیں سر. ٹھیک ہے، پاس کرائیں. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Now I take up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble, short title stands part of the bill. Law Minister Sahab to move item number 4F. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed.
جی आजम साहब कुछ बताएंगे? देखिए गौहर साहब ये नहीं गौहर होगा। साहब रूल सबके लिए एक होगा। हमें ना सुने। अगर इनकी बात सुनी जाएगी हमें नहीं सुनेंगे तो तो कोई आपकी भी नहीं बात सुनेगा। सुनी जाएगी। आप करें गौहर साहब मैं बोल रहा अगर मेंबरान बैठ जाएंगे उनकी बात सुनेंगे तो आपकी बारी भी आ जाएगी। मैंने मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ जी आजम साहब बात कीजिए। सर इन्हें सुनने की आदत नहीं आप है। बात कीजिए जी। ये चोरी चकारी की बात करते हैं। पहले वो 190 बिलियन का तो हिसाब दे खुदा के लिए। ये सारा कुछ आपके लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। चले बात सर ये हमने जो नंबर ऑफ जजेस है इसको ये बात नहीं हो सके, इनकी बात नहीं सुन नहीं रहे। आप सुनना ही नहीं चाहते जनाब गौहर साहब आपको फ्लोर तब दूंगा जब इनकी बात सुनी जाएगी। जनाब इनकी बात सुनी जाएगी तो जनाब स्पीकर now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4G. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. गौहर साहब सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, आपके लोग सुनने को नहीं तैयार। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to further amend Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. Clause 2, the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 5 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Consequently, clause 5 stands part of the bill. The question is that clause 6 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 6 stands part of the bill. The question is that clause 7 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 7 stands part of the bill. The question is that clause 8 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 8 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. So clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Azam Nazir Tar Sahab, Minister Law, to move item number 4H. Sir, I wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed.
Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4I. I wish to move that bill to amend Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at Now I once. put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause by clause. हो ही नहीं सकता गौरव. The question is that clause to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 do stand part of the bill. Clause 1, preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. Azam Nazir Tar Sahab to move item number 4J. Mr. Speaker, I wish to move that the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. Azam Nazir Tar Sahab, Khwaja Asif Sahab. to move item number 4K. 4K. Sir, I introduce the bill to further amend the Pakistan Army Act 1952. Now a bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Amendment Bill 2024 stands introduced. Khwaja Asif Sahab to move number 4L. I move item number 4L. I introduce the bill to further amend the Pakistan Air Force Act 1953. A bill further to amend the Pakistan Airport Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 stands introduced. Khwaja Asif Sahab to move number 4M. Item number 4M. Move करें. I introduce the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961. The bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 stands introduced. Khwaja Asif Sahab to move item number 4N. Item number 4N. Khwaja Sahab. I move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rules be dispensed with to take into consideration the bills from item number 4O to 4T. Now I put the motion to the House. It has been moved under Rule 288 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 122 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration the bill from item number 4O to 4T. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 4A. 4A. I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952 Amendment Bill 2024 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause 2, the question is that
The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif Saab to move item number 4P. I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Khwaja Mohammad Asif to move item number 4Q. 4Q. I move that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 4R. Further to amend the Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Air Force Act 1953, the Pakistan Air Force Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Item number 4S, Defence Minister to move item number 4S. I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. A bill is now taken up clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 4 stands part of the bill.
Clause 1, preamble and short title. The question is Clause 1, preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1, preamble and short title stand part of the bill. Khwaja Mohammad Asif, Defence Minister, to move item number 40. Sir, I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Ordinance Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. Denji. کرنے دیں The House is adjourned to meet again on Tuesday, 5th November at 11 a.m. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. اپوزیشن ارکان کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا. بل کی کاپیاں پھاڑ دی گئی ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ 1992 میں ترمیم سے متعلق بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کی ہے اور بل کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانا تھا. اسپیکر ایاز صادق صدارت کر رہے تھے اور بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ ترمیم بل 2024 بھی منظور کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ بل کے تحت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 34 تک بڑھائی جائے گی. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا بل بھی ایوان میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کیا گیا. اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ اپوزیشن ارکان کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا. تمام سروسز چیفز کے مدت ملازمت میں 5 سال کی توسیع کا بل بھی منظور کر لیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ ترمیم بل 2024 بھی منظور کر لیا گیا ہے. بل کا مقصد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 12 کرنا ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کی جائے. قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن حکومتی اراکین کی ہاتھا پائی. اراکین کے ایک دوسرے کو دھکے دیے. سارجنٹ نے اراکین کو روکنے کی کوشش بھی کی ہے. قومی اسمبلی نے پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں جاوید نور سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. جاوید نور، بتائیے گا قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن حکومتی اراکین کی ہاتھا پائی ہو گئی، کیا مناظر تھے وہاں کے؟ جی بالکل، آج قومی اسمبلی میں بل منظوری کے لیے پیش ہوئے تو ایجنڈے میں شامل نہیں تھے، اور جب یہ بل منظوری کے لیے پیش کیے جا رہے تھے اس موقع پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور ہاتھا پائی ہوئی. دوران سارجنٹ ایٹ آرمز جو پارلیمنٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان آگے. دوران مختلف جو بلز ہیں ان کی منظوری کا عمل جاری رہا، جس میں پاکستان ایکٹ 1952 میں ترمیم کا بل پیش کیا گیا، جس کے تحت تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے. پاکستان ایئر فورس ترمیمی ایکٹ، اس کے علاوہ پاکستان نیوی ایکٹ، اور تینوں بل جو ہیں یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیے اور یہ بل جو ہے کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بل جو ہے وہ پیش کیا گیا اور یہ بل جو ہے یہ بھی منظور کر لیے گئے، اور اپوزیشن نے اس دوران جو ہے شدید احتجاج کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے سے متعلق بل بھی پیش کیا گیا، اور اس دوران اپوزیشن نے ایوان میں شور شرابہ کیا اور اسپیکر نے کہا کہ اپوزیشن کو بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے گا. تاہم اس دوران شدید کشیدہ ماحول نے دیکھا قومی اسمبلی میں اور شدید احتجاج ہوا، اور اپوزیشن اراکین نے شدید احتجاج کیا. جو بل تھے ان کی کاپیاں جو ہیں وہ پھاڑ دی گئیں اور اس دوران احتجاج جاری رہا. دوسری جانب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رہا اور بل جو پیش کیے گئے تھے ان کی منظوری کا عمل بھی جاری رہا، اور یہ بل بھی جو ہے اتفاق رائے سے یہ تمام بل جو ہے یہ منظور کر لیے گئے. ٹھیک ہے، اور اس وقت اجلاس میں جو صورتحال تھی اب سے کچھ دیر پہلے جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے ہاتھا پائی کی گئی، بل کی کاپیاں پھاڑ دی، اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، جس وقت یہ بل جو ہے وہ پیش کیے گئے تو اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. اسپیکر ڈائس کے سامنے بھی جو اپوزیشن اراکین ہیں وہ پہنچے، جس میں
बड़ी तादाद में अपोजिशन अरकान थे और वो शदीद एहतजाज कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है बिल की मंजूरी के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि उजलत में जो है वो बिल मंजूर किए जा रहे हैं। इस पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर का डायस जो है वो घेर लिया, शदीद एहतजाज किया और इस दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान जो है हाथापाई और कशीदगी जब बढ़ी तो सार्जेंट एट आर्म जो है वो दरमियान में आए ताकि सूरत हाल को जो है कंट्रोल किया जा सके। और इस दौरान जो अपोजिशन अरकान हैं उन्होंने जो बिल के मुसविदा था वो भी उन्होंने फाड़ के जो है वो फेंक दिए, उछाल दिए हवा में और शदीद एहतजाज का शोर शराबा हमने देखा कि शदीद शोर शराबा था, नारेबाजी का सिलसिला था और एक दूसरे के रहनुमाओं का, लीडरों के नाम लेके जो है वो दोनों जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। हुकूमती अरकान भी और अपोजिशन अरकान भी एहतजाज कर रहे थे। ताहम जो कानून साजी का मरहला है वो इस दौरान हमने देखा कि जारी रहा, उसमें कोई तातुल नहीं आया। और इस दौरान जो बिल पेश किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से और तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक, तो ये तमाम बिल जो है मंजूर कर लिए गए कसरत राय के साथ। जी ठीक है। इसके अलावा बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद जो 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या था? जी जावेद नूर, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्योंकि आज 3 बिल पेश किए गए हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जा रही है। और कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया, इस हवाले से भी बताइएगा। नाज़रीन को बताते चलें कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जा रही है। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। बिल में आर्मी चीफ के मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी की तजवीज़, तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसी का बिल मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है। जावेद नूर, बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? क्या आईनी बेंचेस की वजह से या कोई और मामला है? जी, हुकूमत ने ये बिल किसी हद तक जो है वो उजलत में पेश किया और इससे पहले जजेस की तादाद में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद जो है बढ़ाई गई थी, लेकिन इस पर जो है इक्तिफा नहीं किया गया। और आज हमने देखा कि उजलत में जो है वो बिल आया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाकर अब 34 जो है वो की गई है। जो बिल अब इस वक्त मंजूर हुआ है और जो तवक्को है कि कुछ देर में सेनेट में भी पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद सदर ममलिकत जो है जब दस्तखत करेंगे तो कानून बनेगा। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की तादाद है 9 है और उससे बढ़ाकर अब जो है वो 12 की है। ये तब्दीली आ जाएगी, यानी जजेस की तादाद में इजाफा है। हुकूमत के इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में हज़ारों केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लाखों केसेस हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो सूबाई हमारी आला अदलिया है इसमें जो केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को साल हर साल इंतज़ार करना पड़ता है और उनके केसेस का फैसला नहीं होता। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस मसले के हल के लिए कि ज़्यादा जजेस जो है वो मुतय्यन किए जाएँ तो बर वक्त जो है आवाम को इंसाफ मिल सके और उनकी दरख्वास्तों पर जो है वो फैसला हो सके। इस मकसद के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई गई, अब मजीद इसमें इजाफा हुआ है और ये तादाद जो है वो 34 की गई है। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ाई गई है और आगे लगता है कि दीगर जो हुकूमत की ख्वाहिश है कि जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, लाहौर हाई कोर्ट है, इनके जजेस की तादाद जो है उसमें भी इजाफा किया जाए। तो हम क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वफाक की हदूद में है, वफाकी दारकूमत में, इसलिए जो कौमी असम्बली है वहाँ से ये बिल मंजूर किया गया है। हाई कोर्ट के हवाले से भी, यानी अदालत आलिया और अदालत उज़्मा दोनों के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक ये बिल जो है मंजूर किए गए हैं। अपोजिशन ने इस हवाले से एहतजाज किया है जिसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ देर कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका भी कहना था कि जो बिल मंजूर किए जा रहे हैं उससे उनका इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी इस हवाले से तरमीम हुई है तो अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, जो अब ये बिल जो है पेश किया गया है और मंजूर करने का अमल उस वक्त जो है वो जारी था जब मौलाना फजल रहमान, उससे कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जबकि जो अपोजिशन अरकान हैं, अपोजिशन रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी
शदीद एहतजाज किया गया और उनका ये कहना था कि हुकूमत अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जजेस की तादाद जो है उसमें इजाफा कर रही है। जजेस की जितनी तादाद बढ़ाई जा रही है ये गैर ज़रूरी है और अपोजिशन ने कहा कि उन्हें एतमाद में भी नहीं लिया गया और इस पर जो है शदीद अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी हमने देखा। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, जो अपोजिशन मुख्तलिफ अरकान हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्हें जो बिल पेश किए जा रहे हैं ये इस बिल पर बोलने की भी इजाज़त दी जाए और उनका ये भी मौक़िफ़ था कि जो कौमी असम्बली में मुतय्यन तरीक़ेकार है कि कोई भी बिल अगर पेश किया जाता है तो वो बिल सबसे पहले जो है कौमी असम्बली में पेश होता है और उसके बाद जो कमेटी है, कायमा कमेटी मुतालिका कानून इंसाफ से मुतालिक, तो वो बिल क्योंकि ये अदलिया से मुतालिक जो बिल थे तो ये कानून इंसाफ की कमेटी में जो है वो भिजवाए जाएं और वहाँ पर इस पर बहस व मुबाहिसा हो और उसके लिए मुतय्यन कमेटी चाहे तो एक दिन में भी बिल जो है मंजूर कर सकती है, लेकिन इसके लिए 60 दिन की मुद्दत होती है जिसमें इजाफा भी किया जा सकता है। तो अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि जो बिल मंजूर किए जा रहे हैं उसे कमेटी में भेजा जाए ताकि उस पर बहस व मुबाहिसा हो और उसमें अपोजिशन की तजावीज़ जो है वो भी शामिल की जाएँ और उसके बाद फिर जो है ये बिल जब कमेटी की रिपोर्ट के साथ कौमी असम्बली में दोबारा आए तो फिर इसकी मंजूरी के अमल के हवाले से जो है। ठीक है, जावेद नूरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हाफिज एहसान साहब, आज कौमी असम्बली में 3 बिल पेश किए गए हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से और आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया है जिसके तहत मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसीक की जाएगी। इन तीनों बिलों को आप कैसे देखते हैं? बराए मेहरबानी आपको बताते चलें कि आज कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया है और कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जा रही है। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ती, हाथापाई की गई। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। बिल में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसीक की तजवीज़, तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसीक का बिल मंजूर कर लिया गया।